Who told you this word? Tell me the name of that guy. Huh? Hi guys, I hope you're doing really well. मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मजे में रह रहे हो, एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो भाई ऑफिस से हो गया था फ्री, घर गया, नहाया धोया, जिम मारी भाई साहब, गाड़ी निकाली, अब जा रहे हैं भाई बैंड्रा। बैंड्रा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई मैं 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले शायद एक पार्टी गया था, तो वहाँ पे मेरी एक दोस्त बनी थी। तो दोस्त बनी थी, कह रही यार बैंड्रा जा। बस दिक्कत पता है क्या, मैं थाने रहता हूँ, हर चीज़ बहुत दूर है भाई, तो आलकस आता है। रोज़ पार्टी हो रही है, रोज़ कोई इवेंट हो रहा है, बट अब मैं नौकरी पेशे वाला हो गया हूँ ना, तो मन नहीं करता यार। एक तो मैं चीज़ बताता हूँ, मैंने अभी नोटिस करी, जब तुम मुंबई होते हो ना, मुंबई आ चुका है, ठीक है, मतलब विक्रोली कोई एरिया है, और मुंबई से जब तुम थाने जाते हो और थाने से जब तुम मुंबई आते हो, फ़र्क पता है क्या? जब थाने से तुम मुंबई जाते हो ना, धीरे धीरे थाने में है वाइट लाइट, वो येलो हो जाती है। तो मुंबई की पहचान है भाई येलो लाइट। दिल्ली में ऐसा नहीं है। तुम दिल्ली में देखोगे ना, हर जगह वाइट लाइट चुभती है आंखों में। यहाँ पे येलो लाइट है पूरे मुंबई, बैंड्रा, मज़ा आता है भाई, फील आती है। तो भाई जा रहा हूँ उससे मिलने। और गाइस तेरे को, तुम्हें पता ही है, तेरे को कह रहा हूँ, तेरे को पता ही है गाइस, तो दोस्त तुम्हारा भाई थोड़ा पता नहीं क्यों आया हुआ इंक्लिनेशन टुवर्ड वाइट स्किन। आई डोंट नो व्हाई आई मेक पीपल विद वाइट स्किन, बिकॉज दे गिव गुड कंटेंट आई गेस, आई डोंट नो, बट या। तो भाई थोड़े दिन पहले मैं पार्टी गया था, तो एक लड़की वहाँ ना भाई पूरे ग्रुप में आ रखी। वहाँ पे क्या था, मेरा एक दोस्त है, उसका बर्थडे पार्टी थी, तो मेरे को तो यार व्लॉग शूट नहीं करूँगा, सोचेगा व्लॉग बनाने आ जाता है, तो मैं चला गया भाई, बढ़िया बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। एक लड़की थी वहाँ, मुझे उसने हल्का से एक बार देखा, ऐसे बस टेढ़े में मैं ड्रिल समझ गया। ड्रिल क्या होती है? अगर कोई लड़की, तो मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, कुछ गलत वे में नहीं कह रहा कि आपको उससे कुछ निकालना है या आपको कुछ, मतलब यू शुड नॉट हैव एन इंटेंशन बिहाइंड इट, बट उसने मुझे देखा ना, तो देना वाज लाइक यार इससे बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चाह रही है बात करना। चाहे दोस्त बनाओ, चाहे अगर तुम सिंगल हो, रिलेशनशिप में आ जाओ उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट्स हाउ यू शुड गो अबाउट इट। कि इफ अ पर्सन इज लुकिंग एट यू, वो ये चाह रहा है कि तुम उससे जाके बात करो, तो उसी टाइम बात करो, फटनी नहीं चाहिए भाई। दोस्त बन गया, मिलने जा रहा हूँ भाई, देख लो भाई, ये चक्कर है। तो ये है भाइयों सीन। और भाई गाड़ी का क्या सीन है तो मैं बताता हूँ। अब लिटरली गाड़ी की ना, मतलब ज़रूरत नहीं है, बट जो E20 V20 चल रहा है ना, ये पुराना इंजन है, इसमें प्योर पेट्रोल चाहिए भाई। आजकल की गाड़ियों में E20 पेट्रोल भी चल जाता है, E30 भी चल जाता है भाई। इसकी एवरेज ख़त्म हो रखी है, मतलब जिसे कहते हैं ना वो हो रखी है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई ये कंपेटेबल ही नहीं है जो पेट्रोल आ रहे हैं। 5 की एवरेज दे रही है, 6 की एवरेज दे रही है। एक दिन ऑफिस से आया, मैं घर आया, कितने किलोमीटर है आना जाना? 7-8 किलोमीटर होगा। 7-8 किलोमीटर में भाई साहब 1 लीटर तेल गया, 1 से भी 1.5 लीटर, 150-200 रुपये गए यार, ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है। तो ये है भाई, दिल्ली वालों देखो, येलो लाइट है यहाँ, पूरे बम्बई शहर में येलो लाइट है यार। और भाई यहाँ पे जैसे हमारा DLF है ना, यहाँ पे अडानी, लोधा, कल्पतरू, ये 3 बिल्डर हैं। यहाँ मेरी ना एक रियल एस्टेट वाले से भी बात चल रही है, तो यहाँ पे भी जो कहते हैं ना लोग कि रियल एस्टेट का काम छोड़ दिया, भाई दिल्ली में दल्लों की भीड़ हो रखी है, आकाश जैसे। मतलब आकाश तो चलो ऊपर के लेवल का हो गया, ऊपर लेवल पे भी 100-150 ब्रोकर बैठे हुए हैं जो बहुत तगड़ा धंधा कर रहे हैं। यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ 2-3 है, दिख गया मुझे हिसाब किताब। तुम्हारा भाई घुस गया ना, और जहाँ 2-3 है ना, वो भी ज़्यादा ढंग से दिखा नहीं रहे, और उनको दिखाना नहीं आता। तो बहुत चीज़ें चल रही रियल एस्टेट में। मैं इसलिए नहीं घुस रहा क्योंकि जो हमारा काम है ना, पलक भाई, लव यू भाई, चल रहा है भाई। और जो हमारा स्टार्टअप है भाई, उसका बता देता हूँ क्या चल रहा है हिसाब किताब। मेरे को तो ये है, जब थोड़ा सा ना हल्का सा बन जाएगा, तो अपनी कंपनी के फाउंडर से फंडिंग मांग लूँगा मैं। आ जाओ सर, इधर आ जाओ, जल्दी इधर आ जाओ। तो मैंने क्या बताया था पहले दिन, वाई आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, दोबारा बता देता हूँ। बिकॉज द फाउंडर ऑफ माई कंपनी इज अ गोट भाई, गोट इन इन्वेस्टिंग, गोट इन स्टार्टअप वर्ल्ड, गोट इन स्केलिंग अ कंपनी। भाई बंदा जो एक ही उसमें ना 3-4 सालों में 3 कंपनी लॉन्च करके फेंक देना, उस बंदे से तुम 5% भी नॉलेज ले लो उसकी, तुम्हारा बेड़ा पार है। और लोग यही नहीं करते, लोग पैकेज के पीछे भागते हैं। मेरे को पैकेज नॉर्मल मिल रहा है, ऐसा ही मिल रहा है, मतलब अच्छा मिल रहा है, बट जितने पैसे मैं और इधर उधर से कमा लेता हूँ ना, उतना पैकेज है नहीं। अगर कुछ रील बना रहा हूँ ये वो, बट मैं क्यों हूँ? क्योंकि भाई एक तो काम पसंद है, और दूसरी चीज़ भाई फाउंडर बहुत सही है। अगर आप ऐसे फाउंडर के अंदर काम कर रहे हो ना भाई, आपको इतनी ग्रोथ मिलती है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। जितना मैं सीखा हूँ ना यहाँ 4 महीने में, भगवान की कसम मैं कभी नहीं सीखता, कभी भी नहीं सीखता। अगर आप 1 करोड़ रुपए किसी ऐड में डाल रहे हो, 1 करोड़ रुपए ऐड में डाल रहे हो, कैसे डलते हैं?
उसके मैट्रिक कैसे ट्रैक होते हैं, सब कुछ भाई। तो यार ये है, एक होती है आपकी जन्मभूमि, एक होती है आपकी कर्म भूमि। मेरी जन्मभूमि है दिल्ली, कर्म मेरा वहाँ से हुए नहीं बढ़िया, क्योंकि हमेशा जब भी मैं आया हूँ ना भाई बॉम्बे, मेरा कुछ ना कुछ बढ़िया हुआ है। देखो मैं किसी शहर से नफरत नहीं करता, किसी शहर से प्यार नहीं करता, बट बॉम्बे इज़ माई कर्म भूमि भाई। मेरी मॉडलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, मेरी नौकरी यहाँ से स्टार्ट हुई, मेरा कंटेंट पे ट्रैक्शन यहाँ से आई। बस ये है भाई, घर वाले वहाँ उनको भी यहीं ले आऊँगा जल्दी, पापा सेट कर दूंगा मामला यहाँ पे बढ़िया। एक दो पेंट हाउस बालाबार हिल में साइड में होगा भाई साहब, जितने भी हैं बाल ठाकरे, राजा ठाकरे, सब जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, उनके घर के साइड में घर खींच देंगे। ज़्यादा सोच लेता हूँ ना कई बार, मतलब अंबानी के घर पे तो चाहिए मुझे घर, एल्टमाउन रोड, 75 करोड़ का एक फ्लैट है, मुझे पसंद आया 2 BHK, तो वो पापा कर दूँ, कहेंगे कम बोला कर। तो ओके गाइस, बस अब चला जाता हूँ रास्ते में, वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके गाइस, टुडे आई हैड अ रियली टायरिंग डे एट ऑफिस गाइस। I was super tired. You know why? Because I had to shoot so many stuff. But there's a good thing. I'll introduce you to one of my friend. Like 2-3 days ago, I went to a party. मतलब 2-3 दिन पहले बेस्टिन गया था भाई, तो एक दोस्त बनी थी वहाँ, तो कंटेंट तो निकालना है। Say hi to my friends. Hello, but I'm not ready. I'm making my hair now. So let her get ready, bro. तो भाई बेस्टिन मिली, मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ। भाई मैं गया अपने दोस्त के साथ वहाँ, अब मैं बताऊँगा नहीं कौन था, तो गया भाई, ये खड़ी मुझे साइड में देख रही टेढ़ी टेढ़ी, तुम्हारा भाई जो ज़्यादा मौका थोड़ी देता है। मैं हाय व्हाट्स योर नेम, तो या सो से हाय टू देम। Hello. व्हाट्स योर नेम? My name is Margot. व्हाट आर यू डूइंग इन मुंबई? Enjoying life, I guess. Visiting. Touristing. So I was telling them we met in Bandra, no, in Bastion. Yeah, it was a nice party. And I got this jacket. What do you think? So tell me one thing, you have been to so many places in India, why you love Mumbai the most? Because I've made a lot of friends here. Yeah. So this is the place where I'm enjoying the most, let's say. Best place is Goa in terms of. So Goa, you are party person, huh? Yeah. Come, let's walk and talk. Okay. So you are a party person, I am, yeah. huh? Yes. Guys, she party all night. Okay? Yeah, I party like let's say 4 days in a week, like Thursday, Friday, Saturday, Sunday. But now I'm trying to get some rest because it was too much, and Why people stare at you in India? I think because I have green eyes. Arey, Oh, wow. Give the mic to him, this guy. Now he's on the phone. So भाई ये मिल गया भाई, क्या हाल है? याद हूँ मैं याद हूँ किससे बात कर? याद हो भाई, बहन से। बहन से, चलो ठीक है। हैं? Come. This guy is my friend. Huh? Yeah. Really? How We come? are friends. How come you're We friends? met. We met. Hey, how you doing? Fine, thank you. So we are friends. We met. Where do you meet? Where did we meet? हाँ भाई? Ask him in Hindi. Where did we meet? कहाँ मिले इससे, इन लड़की से, इससे कम कहाँ मिले? नहीं इधर ही मिले, अभी तुम्हारे साथ में तो है। अच्छा, मुझे मेरी दोस्त हो आप इससे। Where are you from? I'm French. French. Oh. And you? Are you from Bombay? I'm from Bombay. भाई I love Bombay. To me, it's the best city in. मुझे लगा भाई सही में दोस्त आपकी। नहीं। नहीं? कहो। क्या हाल है? क्या हाल है? तो भाई ये चक्कर है, लड़की एक्सट्रोवर्ट है, ये भी तुम्हारे भाई की तरह। So yeah, she was telling me about like why she don't like Indian guys. She told me a story. Yeah, no. Yeah. I like Indian guys. I mean, like, don't tell my secrets, please. Oh, This should not. ice cream. Yeah, this should not be public. Yeah. So, do you think I have a French accent? Teach me a few words in French. How would I say like I'm really smart? Je suis intelligent. Hein? ये ओके कह रही भाई? Je suis intelligent. Okay? Oh, you know, I know something in Hindi. क्या? But this is bad, right? Yeah, say. Tout chaprier. भाई ये क्या है? छपरी बना दिया तुम्हारा। Who told you this? That leave that guy. He's not good guy. भैया आइसक्रीम है? You wanna have ice cream? Yes. Huh? Yeah. So what else you know in Hindi? Tout motié. Huh? Tout motié. Huh? Tout motié. Like क्या? moti, like fat, right? तू मोटी है। Tout motié. I know only bad stuff. You only know bad stuff. Yeah. And then I know ek, do, tin.
चार Char? 5 Parch? Set? ना ना गंदी बात है नहीं गंदी बात है हाँ so tell me like some bad words in French Ferme ta gueule, gros bâtard. Hein? Ferme ta gueule, gros bâtard. Femme ta gueule goal beta no Ferme ta gueule, gros bâtard. It means like shut your mouth, big bastard. I don't say bad words okay you can say bad words in Hindi but I don't say in any language Can you teach me how to say like shut the fuck up in Hindi? shut the fuck up in Hindi अरे चुप हो जा Arrête, chou, boya! सही बोल गई भाई पहली बारी में I knew how to say I love you in Hindi as well. से I don't remember. think about it भैया दिखाने इतने आइसक्रीम दिखा दो यार शुगर फ्री है कोई think about it and let me know okay what do you want to have Cornetto. sell ice cream. You're a guy from business school, right? I'm a gym freak. I don't like ice cream. Sell ice cream to me. Okay. Okay. So like you are a business student. I'm coming to you and like I'm asking like I don't like ice cream, so you have to sell ice cream to me. Come this side because light is there. So yeah, Okay. Yeah. So, do you feel hot sometimes? I'm always hot, ma'am. yeah. So I'm always hot. Yeah. So the best way to get fresh is to get the ice cream, right? Yeah. Like the taste is good. This is sweet, but not like it's 0% sugar, so it's okay. And then you look always cool when you have ice cream, right? How much protein in it? 100 gram per licking, which is good. Like one, one, 100 gram of protein. Every lick you बहन चोद समझ रहे हो एक बार if you want to become like a strong bodybuilder, you भाई should have an ice cream, right? एक आइसक्रीम में Like हो if- जाएगा if you- एक आइसक्रीम में 500-600 ग्राम पूरा Exactly. Like if you lick an ice cream like 10 times, it's like 1,000 grams protein. This क्या is, so you want one? yeah Okay, please so please give price it is words 1 lakh per ice cream. Bye. बावली समझ रही है भाई. So yeah, tell me you have been to Hyderabad, you have been to Goa, you have been to Mumbai. Which place you like the most? Wow. This is complicated. I lived for 2 months in Goa. So I guess like Goa was so nice, but Goa, the thing is you meet people in Goa and then अभी आके लेते हैं. Sorry. अभी आके लेते हैं. हाँ. Come. Let's go. so you but so we are not having a You are having you. I feel like your mind is going so fast. Like you think about something and then something else and then something No, else. we'll have it after coming back now. Let's go and come back. Yeah. So yeah. Okay. Yeah. यार फिर मैंने सोचा कि डाइट खराब हो जाएगी. शूट है मेरा एक. लेना तो चाहता था मैं आइसक्रीम बट मेरे एप्स खराब हो जाएंगे. I was telling you like you kind of like me. I like you. Yeah, I was telling them. Oh, tura. Oh bhai, who told you this word? My friends. Okay. No, okay, so to answer your question, so I lived in Goa for 2 months. It was so good, but the thing in Goa is that you meet people and then they go back to cities, right? So you cannot really like, make a group of friends. Here in Mumbai, I have a lot of good friends, but they are French, so I'm not like connected to like Indian people. And in Hyderabad, I met so good people, and they are Indians and French as well. So I cannot choose. But I love Mumbai. Like I'm staying in Mumbai. But guys, there's a thing. I'm being honest with you. Whether it's Mumbai, Hyderabad, Delhi, Goa, when there's a I white, haven't been to. whenever there's a white girl walking on the street, everybody watches. I don't know why, but this is what I've felt. Because of the green eyes. Huh? Because of the green eyes. No. They can't see your eyes from far away, but still they look at you because you are with. Style, right? With my new white jacket. I would rate your jacket like 3 out of 10. What the fuck? Okay, don't speak to me anymore. Allez, ciao. End of video. चलो भाइयों मिला था इससे. So tell them about the party which we met. Like I was telling them, it's super nice. We had so much fun. Can you rate again my jacket first? Your jacket is like 3.5. 7.5. Rate my jacket. Mentos. 0. You loved it. You loved it 2 minutes before. No. No, I like it because it's Mentos brand. Yeah. But this look like maybe short on you. Can I film you so then I show them? Like, this is cool because this is Mentos. But my jacket is better, first of all. Second of all, like if you do this, like you can see, like do this.
take my क्या? What I do? This looks short on you. This is style, you know. This is style. Yeah. Yeah. Okay, so what was your Tell question? something that Indian people don't know about France. French people are nice. They are not rude, and if they don't speak English, it's because they don't dare on speaking English. Guys, I've heard like French people are really arrogant because in European countries, I've heard like French people think like they are the best and they think every other country is not best. I don't know why. Yeah. Why you guys think so? Because we are the best, right? देख रहे हो भाई ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में बस. What are your views on Indian guys? Just a general opinion. Yeah. They're nice. I like Indian guys. Also, something I'm shocked about. Actually, Indian guys they're very in shape. Shape Yeah, like fit. yeah, like with abs and big arms, big biceps and stuff. ओ वे फिर आ गए अब जैसे वो आयो मैंने साले में धक्का ही मार दियो मैंने जो देखी जा साली अब देखी जो बर्दाश्त अब न हो रही भाई मैंने साले में धक्का मार दिया उनको ए बहन से मैंने की तेरी बहन को कहा बहन से Like I was not expecting this, but I guess like most of the Indian guys. Better than French guys. Yeah, be honest. हल्की हल्की उम्र के पतले पतले से अब भैया 2-3 आ गए वे और आके टक्कर सी मारे I mean, like, it's different because your population is way like higher than ours, right? But in terms of ratio, I guess Indian guys, they are in shape. मैंने साले में धक्का मार दिया उनको ए बहन से मैंने की तेरी बहन को कहा बहन से Yeah, So you like guys with and I big- like your spicy guys. Huh? I, Spice. yeah, like I like Indian guys is So my you- type. बस बिजनेस कुछ नो बस सिस्टम ही है सो पैसा अपना आप ही नुका को राजा भाई You like guys with abs or without abs? Just a general opinion. You're asking a girl, so of course I'll say with abs, right? But big abs, like Like big, some girls like with peta, like petla guy with huge stomach. Some, like a some mota guy. mota guy. No. Who told you these words, mota and all? Yeah, I don't know. Like I'm just, yeah. I should remember how to say I love you, but I don't remember. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. प्यार करती हूँ. Pyar karti hon. So you love me? No. You just said it. No, no. भाई ऐसा देख ले. So yeah. So no ice cream? So I'll teach you few Hindi words now. Okay. Yeah. भाई मेरे को उत्कर्ष is नहीं हिंदी. उत्कर्ष बहुत. Because in Delhi you speak another language. I know Haryanvi also. There's one more language. I know 3 languages: Hindi, English, and Haryanvi. And French. I'll teach you Haryanvi. And French. French also. Bonjour. 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 How would I? Now we say bonsoir because this is the night now. Bonsoir. 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 Oh भाई. तो I'll teach you Haryanvi. भाई तू घना सुतरा बालक है. जैसे तू घना सुतरा बालक है. Tu grana suta barake. तू घना सुतरा. तू घना Tu grana sutra बालक है. barake. What does that mean? That means Utkarsh, you're really smart. What? Utkarsh, you're really smart. You just said like I'm really smart. तो यार भाई, but yeah, Bombay is fun. Literally, I'm telling you, like I'm from Delhi, but in Bombay, people look at you for just 2 seconds. If I would have been in Delhi, people would have stared us. Literally, I'm telling you. If we were in Delhi, people were like sitting here and looking at us. Okay, so now I've heard like French guys are really smart. Yeah. So tell me the captain of French football team. FIFA is going on, and your team is one of my favorite. Who is the captain of French football team? Fast. Olivier Giroud, but I think he doesn't play this time. I don't know. My brother. Mbappe. My, Mbappe is the captain. oh, okay. I didn't know. My brother, they will kill me if they see this video. What's the height of Eiffel Tower? You don't know this. You don't know this. 30 meters, something? Is it? Do you know? Yeah, What is it? it's 193 feet. I don't speak in feet. I think I'll check, but I guess it's like 30 meters, something. Wait. कुतुब मीनार की हाइट पता है मुझे. वो है भाई 250 बिलांद. बिलांद पता है ना तुम्हें? 1, 2, 3 बिलांद.
You don't know the height of. What's the capital of France? Paris. Huh? Paris. What's the capital of India? Delhi. Delhi, right? New Delhi. सही है भाई, सही है भाई, बढ़िया है यार, ये ना बढ़िया होता है, चिल होते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, कंटेंट भी आ जाता है. About Eiffel Tower, how many feet did you say? I say 1193 feet. No, it's 330 meters, so I was right. 330 meter, you didn't say 330 meters, you used 40 meters. 40 मीटर कह रही है, बावली समझ रही है मुझे. I'm trying to fool you, but it doesn't work. Big brain. So tell me, if anybody watching you right now want your hand, or they wanna marry you, how? You want to marry me? No, I don't wanna marry you. You Why said you think? that. Why You you think? said So? that, I yeah. never When said. I I never said that. I never said that. I never said that. No, no, no. If When I said I'll buy a house in Goa, I said, why don't you say oui? You always want to be part of my no, plan. guys, We she was met like 3 days ago, and now he wants to buy a house in Goa with me and stuff. I was like, she was like, I wanna buy a house in Goa. Then I was like, I also can I can be a part of that house, right? But I don't wanna marry you. Don't be so happy about it. Okay. You're not so lucky. Ula. You are not so lucky because you don't have green eyes, and I told you I want Green child. eyes is not a parameter of handsome. Okay. Green eyes, a 99 guy, and you are 98. I'm 99. And then I So said, this is the requirement. Green eyes, 1999 born, football player, football player. spicy guy, like tan guy, like spicy. Spicy guy means I don't know the meaning of spicy. Spicy, it's like not a white guy, right? A tan guy. I love like a Ten, just like me. yeah. Okay. 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 And then like a like Height. What's the height? like yeah, tall. You are good. You were saying like you just wanna have a guy. like a You big- you can say I just wanna have a guy like Utkarsh. So it's super easy for them to understand, right? Why are you specifying everything? Just say I wanna have a guy like Utkarsh. No. Yeah, guys. But she's into astrology. No, I quit astrology. I just told her one thing. Like guys, you must have seen जो तुम्हारे हाथों की लकीर होती है ना, ये जो होती है, अगर ये मिलती है ना तो तुम्हें सुंदर बीवी आते हैं. मैं तुम्हें बताऊंगा. मतलब अगर तुम ऐसे हाथ जोड़ते हो, अगर तुम्हारा सेमी सर्कल बनता है, तुम्हारी सुंदर बीवी आएगी, वरना भुंडी शक्ल की बीवी आएगी. तो इसका जुड़ ही नहीं रहा. मैंने कहा तेरी भुंडी शक्ल का हस्बैंड आएगा. चिंगर की भाई है. चिंगर की मतलब she got crazy. She was like no, I wanna have handsome husband. Show me your catwalk. Like if you're starting modeling in India, how would you walk? Like this. Yeah, let's see. भाई इसके देखते हैं. आजा. No, it's not like this. No. You are the model. I'm not. I'll teach you. I'll make you a model. Okay. No. Isn't it annoying? Guys, one more thing. She's a businesswoman. Okay. Yeah, I'm more into business than modeling. Huh? Yeah. So what do you wanna tell to the guys who wanna start their own business but don't know how to start, where to start, what to start? Because in India, everybody wanna start their own business, but their mind is shitty. I'll tell you one thing. This is not nice. You are insulting people now. No, I'm not insulting. They're just sweet. No, yeah, I'll tell you. No. There's a thing. Like in India, people are really ambitious, but That's they're lazy. good. But they're lazy. That's not. If a person with ambition is lazy, that's the best. That's the worst person, I think so. So my best advice is, which is a French quote. It's like l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. It means like future belongs to people who wake up early. But you party all night. You don't wake up early. You don't have to say this. भाई बावली बना रही, तुम्हें बावली बना रही. भैया एक कौन दे दो यार, कौन नहीं, एक कप दे दो छोटा, चॉकलेट का है कोई कप? तो एक यार ये डबल चॉकलेट मैग्नम दे दो, मैग्नम. ठीक है. How come you know about Magnum? Because I guess it's French now, isn't it? I think it's French brand now. Is the way you look at me now. Huh? You have a funny face, actually. I have a funny face. Huh? Really? I have a funny face. Yes. How much would you rate my face from like out of 10? 5. Bye. Who are you? And see, it's not with its label. So I have to say bye. Okay, bye. And when are we meeting again? Guys, I was coming to Bandra and she stays in Bandra. This is the last time you see me because I don't want to meet him again. So, bye guys. It was really nice to meet you and see you never. So guys, in next vlog, I'll give you few business lessons which she'll give to you. She's kind of filthy rich, I'm telling you. She owns a factory in Hyderabad and in Goa
and in France, I don't know why I'm saying this. So yeah, I'll give you some business tips from my end and from her end. And then we can do a vlog in a party, but you say you don't party, but you I can don't drink. You should come with me in Bastian's or Have you somewhere. you have some good-looking friends? If you have good-looking friends, I'll come. Of course, I belong only with good-looking people. Same as you told me. I'm looking for good-looking people to hang out. I am too, right? Yeah. Even if you're a 5 out of 10. Okay. So okay, guys, now we'll have ice cream and I'll just say bye to her. I just came to meet her to Bandra. Next time she'll come to Thane. Huh? No. I'm super happy with this idea. भैया दे दो यार, बहुत देर वेट करा दिया आपको. स्कैनर दिखा दो. यार इधर तो आओ भाई, हमारा पट्टा मिल गया. इधर आ जा भाई. क्या हाल है, इधर आ. ठीक है भाई. भाई आप मेरी वीडियो में क्यों नहीं आना चाहते? आना पिछली बार तो आया था ना भाई. बढ़िया हो ना? बंदी ठीक हो. कैसी है? अब हो गया ब्रेकअप? सही हाँ. ब्रेकअप चल रहा था. ठीक है भाई. हाँ? सही है. He just broke up. He's really sad. Oh, I'm so sorry. What's the name of the girl? सही. Do you want to tell her something? उसको अगर वो लड़की देख रही है, तुम्हें उसको कुछ कहना चाहोगे? अच्छी है. है कि उसको बोल दो ना, बंदी को कुछ, वो देख रही हो जो क्या छोड़ गई. बोलूं, जो नहीं मिली. Super sad. Oh no. You want to cry? You wanna Oh say? no, it's crying a bit. Oh no. ओ भाई सही में हो गया भाई यार, गले लग जाओ यार. Oh no. कोई नहीं भाई, कोई नहीं, कोई Sweetheart. नहीं. You wanna say something to his girl? Her girl. I don't know her. Just say anything. His girl left him because I don't know why, but left him. आपका मेरा आया नहीं पिछली बार. Do we मैं know डालूंगा. why? इसमें मेरा Do we पिछली know बार why? नहीं आया. डालूंगा. पहले बताओ बंदी क्यों छोड़ गई? जब क्या मालूम, उसको कोई मिल गई होगी. You just say something bad to her girl. No, I'm not mean. I don't know her. But yeah, it's cute, so maybe she did a mistake. But she might come back, right? No? Huh? चलेगा चलेगा. She will come. Did you cheat on her? Ah, you said yes? That's why you said that. अरे बहन जो चीट करके बैठा है, भुट्टा बेच रहा है क्या? So how come you know he cheated on her? Because you said yes? I said, did you cheat on her? He was like, भाई आदमी, this is the bad thing. cheat on people. In India, people cheat and they show like now they miss. After cheating, guys miss in India. Huh? And then they cry. They said, Then they cry. First they cheat, then they cry like, oh, my girlfriend left me. yeah, but if you cheat on the girl, then the girl just leaves and ciao bambino, right? Ciao means bye. Bye. Okay, bye. 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 Who are you? Come. Give my ice cream back to me. Okay, so let's say final bye to them. In French. Au revoir, bisous. And in Haryanvi now. अरे चला जा. Arre la chada. अरे चला जा. Arre la chada. अरे चला जा. Arre charaja. अरे चला जा. Arre charaja. ठीक है, अरे चले जाओ भाई. ओके बस घर चालू हूँ मैं. And what are you doing in my car? We just said why. What are you doing in my car? अरे क्या कर रही है? What are you doing in my car? What are you doing in my car? Huh? Why गाड़ी में आ गई भाई? Why? What are you doing in my car? Who gave you permission to come in my car? भाई गाड़ी में आ गई बिना बताए. Who told you to come in my car? Huh? See, parce qu'I've been How this a happened? shark. Huh? A shark. Shark? Yeah. Means? In Goa. A shark. Your car. So basically, I wanted to spend a bit more time with you. Now. So. So? Still you are in my car. Still you are in my car. I need to finish my ice cream. That's भाई why. जाइनारी भाई जाइनारी चलेगी भाई. You said my. What the f? सॉरी ओए Yeah. भाई बताना क्या कर रही भाई. It's been like 5 times we said bye to them. Yeah, you don't want to say bye to me, na? Just say them upfront. Just say I don't want to say bye to Utkarsh. He's really handsome and funny. Just say this. No. No? No. बात तो यही है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बात तो यही है Tout chaprier. भाई इनको कोई ऐसे शब्द क्यों सिखा देता है? तू छपरी है, क्या मतलब इसका ये बोलने का भाई? तू छपरी है. Who told you this word? Tell me the name of that guy. Huh? I think it was Satyam, a guy from Kashmir.
सत्यम भाई क्यों सिखा रहा है ऐसे वर्ड यार, बेचारी को बिगाड़ रहा है यार कोई यार। Satyam Gupta. सत्यम गुप्ता, वो बढ़िया बढ़िया साहब जी, बढ़िया भाई भाई, यस भाई यू आर टीचिंग। Satyam. तो सत्यम मेरे भाई, Satyam, I'm sorry. सत्यम ब्रो, व्हाई आर यू टीचिंग अ फ्यू वर्ड्स लाइक दिस? टीच अ लाइक रियली हैंडसम वर्ड्स यार, ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड सिखाओ। बहन वहन मतलब गंदी बात करते रहते हो। ओके गाइस, 5th buy, this is the final buy. No, it's more like 10th than 5th. See, I have because of sugar, When you are in love, acne happens. I think you are in love. but not with you then. I know, with not with me. You are in love with some chapri guy.